Hello, children. This is the third chapter of My English Garden, and we read the chapter till here. And you may remember that what we discussed in the last video, we were talking about that Simpson and the writer, that how uh, writer was trying to help Simpson out, but finally what happened, that Simpson forgot everything and he came back to the writer to get the way to post office. So now I'll read for you from here. I felt inclined to agree with him. I led the way to the post office. Simpson inserted a penny in the automatic stamp machine. So what happens now? Simpson got half inch and he went to the writer with the post office, and there what he does, he he tried to put the money inside the auto stamp machine. मशीन में पैसे डालता है एंड फाइनली इससे क्या होता है. अच्छा, इंक्लाइन मीन्स किसी से अग्री हो जाना है, फिर किसी की तरफ झुकाव करना. सो द राइटर ऑल्सो इज सेइंग आई फील इंक्लाइन टू अग्री विद हिम. इट मीन्स राइटर ऑल्सो सेज कि ही वॉज हेल्पलेस, ही कैन नॉट डिनाई टू सैमसन. सो इससे बेटर है कि वो उसको अग्री कर दे, उसको जो भी वो हेल्प चाह रहा है उसमें सहमत होता हो, उसकी हेल्प करता रहे. Then both of them went to the automatic stamp machine. There again they tried. Now what happens? It's empty, I explained. Oh, said Simpson. Now again Simpson tried to put the money in the automatic stamp machine, but what happened, that the machine was empty. Experiment revealed that the stock of halfpenny stamp was also exhausted. And what happens, that again and again, because of trying into the machine, automatic stamp machine, the machine also got exhausted. पूरी तरीके से वो खाली हो चुकी थी. हाफ जो स्टैम्प्स थे, यानी मशीन में कोई स्टैम्प नहीं रह गया था. Simpson's, in his agitation at this discovery, dropped his letter face downwards on the pavement. When he retrieved it with the addition of a large blob of mud. So now out of hesitation, झुलाहट में क्या करता है, hesitation means गुस्सा या फिर झुलाहट या irritation में, what he did in by mistake, that he dropped the letter down, और जहाँ पर मशीन जो फर्श होती है वहाँ पर गिरा देता है. When he retrieved it, or when he tried to get it back, so the envelope or the letter which he received again, which he got in his hand again, it got blob of mud, यानी उस पर अच्छा खासा एक मिट्टी का धब्बा पड़ गया था. There, said Simpson, quite petulantly. So now again Simpson has very much has got very much annoyed and he started complaining. उसे वो complain करने लगता है. petulantly means complaining. थोड़ा childish behavior हो जाता है. the way kid starts making fuss, वो नखरे दिखाने लगते हैं. same as Simpson has also started doing before the writer. Now it's got mud on it. He rattled empty machine spitefully. Well, what can we do now? Now again he started speaking to that machine also spitefully. बहुत ही उसको गुस्से से देखने लगता है, hatred से देखने लगता है, और कहता है what we can do, हम अब क्या कर सकते हैं. I suppose it must go tonight, I said. Now again he says that इस लेटर को तो आज ही जाना है, आज ही रात में इसको पहुंचना है. Dear me, yes, my wife was most insistent about that. She said I wasn't too. It's well, I don't know whether it is it's extraordinarily important, but I would better post it if you know what I means. So now in these lines Simpson is talking about his wife's nature, that she is very insistent. It means she is very stubborn, बहुत ज़िद्दी है, हट्टी है. And otherwise also his wife thinks about Simpson that
he's careless or he won't be able to post the letter. एंड फाइनली इट हैपेंड ऑल्सो विद सिम्पसन. वही होता भी है जैसा उसकी वाइफ उसको कह के बोलती है, मतलब जैसा बोल के ही भेजती है. नाउ सिम्पसन ऑल्सो सेज दैट क्या ये जो लेटर है इट्स एक्स्ट्राऑर्डिनरली इम्पॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. आई वुड पोस्ट इट इफ़ यू नो व्हाट आई मीन. नाउ अगेन ही इज सेइंग आई विल हैव टू, मुझे इसको पोस्ट करना ही पड़ेगा, अदरवाइज़ वो राइटर से बोलता है अदरवाइज़ यू डोंट नो व्हाट विल हैपन विद मी. I didn't know, or at least I knew Mrs. Simpson. Now the writer also is saying मुझे पता है, एटलीस्ट मुझे सिम्पसन मिसेस सिम्पसन यानी जो सिम्पसन उसके साथ है उसकी वाइफ के बारे में तो एटलीस्ट वो जानता ही था, यानी राइटर उसकी वाइफ के बारे में जानता था. I know I have got a book of stamps at home, I suddenly remember. So at the same time writer said to Simpson that now I remember that I have got a book of stamps at my home. मेरे घर पे बुक पड़ी होगी स्टैम्प की. We ought to have thought of that before, said Simpson almost severely. Now listening to his words that time for the stamp book जो सिम्पसन है वो बोलता है कि वाई डिडंट यू गेट दिस आइडिया बिफोर दैट, इतना परेशान करने के बाद नाउ यू आर टेलिंग. सो सिम्पसन जो है बहुत ही सीवियरली, बहुत अजीब तरीके से उससे बोल के कहता है कि तुमको पहले बताना चाहिए था. वी वुड बेटर हरी और वी शैल मिस द पोस्ट, आई टोल्ड हिम. नाउ द राइटर उससे कहता है, राइटर सेज टू सिम्पसन कि वी शुड नॉट टॉक अबाउट ऑल दिस थिंग, इट विल बी बेटर टू हरी अप, यहाँ से जल्दी अच्छा होगा कि हम यहाँ से जाएँ. एंड वी शुड अदरवाइज वी विल हैव टू मिस द पोस्ट, वरना हम पोस्ट को मिस कर देंगे. We hurried. It took rather a long while to find the book of stamps, please. We hurried. It took rather a long while to find the book of stamps, and it wasn't really worth finding after all. It was empty. But again, unfortunately, what happened? They rushed to the home. वो घर वापस जाते हैं राइटर के. बट फाइनली द स्टैम्प बुक विच दे गॉट देयर, इट वॉज एम्प्टी. उसमें कोई भी पेजेस स्टैम्प के बाकी नहीं थे. सो इट वॉज वर्थ गोइंग देयर. अगेन जो सिम्पसन था ही वॉज annoyed or he was angry. How very provoking was Simpson's summing up of the matter. So now the writer also saying कि कितना provoking, कितना बहुत provoking है, गुस्सा दिलाने वाला सिम्पसन का जो मैटर है, बहुत ही अजीब है. Funny, I said, I could have sworn it was nearly full. Now writer is saying कि आई थॉट दैट ये जो स्टैम्प बुक है पूरी भरी हुई थी. सॉरी, मुझे इतना अंदाज़ा नहीं लग पाया कि पूरी भर चुकी थी और इसमें कोई भी स्टैम्प नहीं बचा होगा. बट वॉट अबाउट माई लेटर, आज सिम्पसन डोलफुली. बट नाउ सिम्पसन अगेन started telling the same thing that leave everything, now you tell me, you suggest me, what should I do to post my letter, what will happen to my letter. And he said all the things dolefully, and sadly he said, now what happens, you will have to post it unstamped. Okay children, I am just going to mark it here. In the next video we'll continue the same chapter and hopefully we'll finish it out in the next video. Okay children, bye bye, take care.